Hello everyone and welcome to Shifting Gears and welcome inside the 2023 Tata Nexon Facelift. 2023 में भी इस Tata Nexon के लिए आपको एक facelift ही मिल रहा है. This is not a new generation Tata Nexon, but you are getting a comprehensive update with this compact SUV. मैं चला रहा हूँ इस Tata Nexon Facelift का top of the line variant. I have with me the turbo-petrol 7-speed dual clutch automatic version and 2023 में भी टाटा मोटर्स आपको इस नेक्सॉन के साथ एक डीजल इंजन का ऑप्शन भी ऑफर करने वाले हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ डज दिस नेक्सॉन फील फ्रॉम बिहाइंड द व्हील. अगर आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, आउट ऑन द हाईवे एंड ऑल्सो सम सिटी ड्राइविंग. हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है वेयर वी टॉक अबाउट द एक्सटीरियर डिजाइन चेंजेस ऑन दिस 2023 टाटा नेक्सॉन. And we also have a separate detailed review video about the interior cabin, the new features which you get, and also about the space management inside this 5-seater sub 4-meter compact SUV. तो अभी सबसे पहले चलिए बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में. 2023 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ आपको मिलेगी एक 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोट्रॉन इंजन. This is a 1199cc 3-cylinder petrol motor producing 88.2 kilowatts of power at 5,500 RPM and 170 Newton meters of torque ranging between 1750 to 4,000 RPM. अगर आप इस गाड़ी का डीजल इंजन ऑप्शन खरीदोगे उसके साथ आपको मिलेगी एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोटॉर्क इंजन which is a 1497cc 4-cylinder diesel motor producing 84.5 kilowatts of power at 3750 RPM and 260 Newton meters of torque ranging between 1500 to 2750 RPM. इस गाड़ी के साथ आपको इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स ये 3 ड्राइविंग मोड्स मिलने वाले हैं और इस गाड़ी के साथ आपको मल्टीपल गियरबॉक्स ऑप्शंस भी मिलते हैं जैसे कि मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT ट्रांसमिशन एंड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक डिपेंडिंग ऑन द इंजन दैट यू चूज. आज के इस वेरिएंट के साथ हमारे साथ है एक 7-speed dual clutch automatic. Just to reiterate, we have the 1.2 liter 3-cylinder turbo petrol engine with 88.2 kilowatts of power and 170 Newton meters of torque. सबसे पहले चलिए बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में. हम सुबह से इस गाड़ी को चला रहे हैं इन एंड अराउंड जयपुर. हमने इस गाड़ी को हार्ड एक्सेलरेट भी किया है. We were trying to drive it hard and fast. काफी देर तक हमने इस गाड़ी को सिटी लिमिट्स में भी चलाया है एंड द कंबाइंड माइलेज फिगर व्हिच आई कैन सी राइट नाउ इज 11.1 kmpl. अभी जब मैं हाईवे पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ ये माइलेज फिगर जो है ये बढ़ते ही जा रहा है. सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग विद दिस टर्बो पेट्रोल मोटर अगर आप हाईवे ड्राइव्स पे निकलने वाले हो मे बी 14 to 16 kmpl is something that you can achieve with 2 to 3 people on board, and inside the city the mileage figure could be somewhere close to 10 to 12 kmpl. If you are going to get stuck in traffic it can go lower, and if you are going to drive with a heavy right foot you know that turbo petrol engines के साथ fuel efficiency जो है it is very sensitive depending on your throttle input. So mileage figure is something which depends on your driving style as well. लेकिन अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप इस टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का डीजल वेरिएंट खरीद सकते हो which is going to be much more efficient compared to this turbo petrol option. तो अभी हम टर्बो पेट्रोल वेरिएंट चला रहे हैं तो सबसे पहले चलिए एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं. हाउ एक्साइटिंग डज दिस टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट फील. सबसे पहले तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल और मैं एंगेज करूंगा Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. स्पोर्ट मोड में मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ. स्टैंडर्ड D मोड में ही मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मैनुअल कंट्रोल मेकिंग यूज ऑफ दीज पैडल्स. तो चलिए चेकआउट करते हैं इस गाड़ी का एक्सेलरेशन इन 3, 2, 1. फुल pedal to the metal, some wheel spin. Listen to the engine guys. इतना इंजन का आवाज आपको कैबिन में सुनाई देगा. आई एम ओवर 90 and I have touched 100 kilometers per hour. So acceleration जो है it is quite brisk and it is satisfactory for the segment standards. Let us try that one more time. I will again pull over to the shoulder. मैं फिर एक बार D मोड में ही ये acceleration जो है इसे चेकआउट करने वाला हूँ. So
let me come to a safe halt and let us check out how good does this engine sound, if at all it sounds good or not. So coming to a halt, I am still in D mode. Sport mode में ये गाड़ी engaged है, and now in 3, 2, 1 full pedal to the metal. As you could notice, it is a little slow off the line, but then it accelerates hard. We are over 80, now over 90, and now over 100 kilometers per hour already. 100 kilometers per hour के ऊपर भी acceleration जो है, it is quite strong. We are now over 120 kilometers per hour, and it is quite brisk, and the acceleration is quite strong. We now touched almost 140 kilometers per hour on the speedometer as the indicated speed, and the Nexon still feels planted over undulated surface as well. So आपने सुन लिया कितना इंजन का आवाज आपको कैबिन में सुनाई देता है. ये एक 3 सिलेंडर मोटर है, so it is not going to be very pleasing in terms of your oral experience. लेकिन ज्यादा कोर्स ये नहीं है until and unless you are really revving it up closer to the red line, to the rev limiter. When you're going to drive it sensibly, it is quiet inside the cabin. अभी चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फैशन में. Let us first talk about the NVH package. अभी जब मैं इस गाड़ी को हाईवे पे चला रहा हूँ, there is some amount of wind noise which you will feel even under 80 to 100 kilometers per hour. Especially अगर क्रॉस विंड्स आप एनकाउंटर करते हो, तभी आपको थोड़ी बहुत विंड नॉइज कैबिन में सुनाई देगी. बट व्हेन यू आर एफर्टलेसली क्रूजिंग, जब आप स्टैंडर्ड डी मोड में इस गाड़ी को चला रहे हो, व्हेन यू आर नॉट हंग्री ऑन द थ्रॉटल, इंजन नॉइज जो है वो कैबिन में मुझे सुनाई नहीं दे रही है, एंड इट इज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑन द इनसाइड. At 70 kilometers per hour, no engine noise. If I pick up the speed to 80 kilometers per hour as well, engine का आवाज कैबिन में सुनाई नहीं दे रहा है. There is none of that 3-cylinder thrum or vibration or coarseness which is felt. So it does look and feel premium on the inside, and it feels comfortable to your ears as well. जब आपको ज्यादा कैबिन में आवाज सुनाई नहीं देगा, you will be stress free for a longer time, and you will enjoy your drive for a longer time, and you will not get tired. तो ये चीज काफी अच्छी है. लेकिन अभी at 80 kilometers per hour on a concrete surface, थोड़ा टायर नॉइज कैबिन में जरूर सुनाई दे रहा है, and that is something that you will have to make peace with. But then that also depends on the road surface and also your tire pressure. I'm going to come to a halt one more time, and this time मैं इस gearbox को manually control करने वाला हूँ. So let us check out the acceleration, and let us check out how fast are the gear shifts. All right, so I am still in sport mode, and now I'm going to use the pedals. So right now it is in manual mode, and in 3, 2, 1 full pedal to the metal. Still a little slow off the line, and when I am making use of these pedals, I am upshifting a little over 5000 RPM, and when I give that shift prompt, it is not DSG DCT quick. ये जो DCA gearbox है इस Tata Nexon Facelift का, it is smooth, it is torque converter like smooth, लेकिन shift time जो है, it is not the fastest. That is something that I can definitely tell you. अगर आपको manual control लेना है over the engine and gearbox, you know, you can stay in the meat of the power band and get the best of acceleration depending on your driving requirement. But it is just that the speed that you expect out of a dual clutch automatic gearbox, that is missing a little. So that is something that you will notice अगर आपने और कोई भी DSG या DCT gearbox वाली गाड़ी चलाई है in this segment or maybe a segment above. So keep that in mind. But in terms of comfort and convenience, of course this is quite usable. तो अगर आप घाट रोड पे इस गाड़ी को चलाने वाले हो, and if you think that you need to rev higher, you need to stay in the meat of the power band, ये pedal shifters जो हैं,
they will be very useful, they will be very handy, pun intended, and they fit in your fingers very nicely. They are in the ideal location. इन्हें यूज करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं होगा. जब भी आप ड्राइव मोड चेंज कर दोगे, you will hear this. Sport drive mode activated. Economy drive mode activated. City drive mode activated. Economy drive mode activated. Like it or not, you have to hear all of this. And let me tell you, जब आप स्पोर्ट मोड एंगेज करते हो फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल, ये गाड़ी जो है इट विल स्टार्ट इन D1 इन फर्स्ट गियर. लेकिन अगर आप इको मोड या सिटी मोड में इस गाड़ी को फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल स्टार्ट करने वाले हो, इट स्टार्ट्स रोलिंग इन सेकेंड गियर. D2 में ये गाड़ी अभी एक्टिवेटेड है. आई एम एट अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल. एज सून एज आई रिलीज द ब्रेक, it is starting to pick up pace in D2. It is still in second gear and there is no hesitation. 3-cylinder vibration या thrum भी मुझे feel नहीं हो रहा है. The mirrors are stable, the IRVM is also stable, the ORVMs are stable, no vibration on the wheel as well. So this is quite well calibrated, this gearbox along with this 3-cylinder engine. And when I tap the throttle, it starts picking up pace gently. कोई भी जर्की मूवमेंट आपको फील नहीं होगी. राइट नाउ आई एम इन D3 एंड नाउ आई एम गोइंग टू कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट अगेन. आई एम स्टिल इन इको मोड बाय द वे. और अभी जब मैं एक जगह पे रुक चुका हूं, इट इज स्टिल इन D2. इट मूव्ड फ्रॉम D3 टू D2 बट नॉट बैक टू D1. अगर मैं पार्क मोड एंगेज कर देता हूं इस बटन को प्रेस करके, सो राइट नाउ it is in park mode. And now when I move to D mode, it has again engaged D2 in eco mode, not D1. So there is that availability of torque lower down in the rev range that the car can start in second gear and not necessarily in first gear. लेकिन अगर आप चाहो तो आप मैनुअल कंट्रोल लेके फर्स्ट गियर में भी इस गाड़ी को लॉन्च कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो. सो दैट इज अप टू यू. जब आप मोड्स चेंज करते हो, अभी मैनुअल मोड में, चेक दिस आउट, आई एम ट्विस्टिंग दिस नॉब बट द मोड्स आर नॉट चेंजिंग बिकॉज आई एम ड्राइविंग इट इन मैनुअल मोड. एंड इन मैनुअल मोड राइट नाउ इट इज होल्डिंग ऑन टू द फर्स्ट गियर. इट इज आस्किंग मी टू अप शिफ्ट, सो इट विल गिव मी दैट कमांड ओवर द इंजन एंड गियर बॉक्स. लेकिन अगर मैं गियर चेंज नहीं करता हूं, गाड़ी ने अभी ऑटोमेटिकली अप शिफ्ट कर दिया. इट नाउ स्विच्ड बैक टू D mode and now it has moved to D3. If I again take manual control, it is now in M2. It is asking me to upshift, but I am not doing that. I am going to rev the car, rev the engine and gearbox. Listen to the engine. Not making any gear changes, not using the pedals. And if I kick the pedal, it starts upshifting. And if you want to make the best use of this engine and gearbox, अगर आपको पूरा परफॉर्मेंस जो है उसे एक्सप्लॉइट करना है, स्विच इन मैनुअल मोड एंड इट विल रेव कंप्लीटली टिल द rev limiter kicks in, and then you will just get the best of acceleration from this Nexon facelift. So that is all that you need to know about this gearbox. अगर आप इस गाड़ी को मैनुअल मोड में चला लोगे, you can't change the drive modes. सिटी, इको या स्पोर्ट, आप कोई भी ड्राइव मोड सिलेक्ट नहीं कर पाओगे. बट देन एज सून एज यू ईज ऑफ फ्रॉम द थ्रॉटल, जब गाड़ी फिर एक बार स्टैंडर्ड डी मोड में चले जाती है, उसके बाद स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. सो वंस यू स्विच बैक टू स्टैंडर्ड डी मोड, आप ये अलग अलग ड्राइविंग मोड जो हैं इन्हें सिलेक्ट कर पाओगे. ये जो गियर स्टिक है, इस पे कोई टिप्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी नहीं है. It is in standard D mode. There is no manual mode over here making use of this gear console. Manual mode is only from these paddle shifters on the steering wheel. Now, I have told you about the engine and gearbox, and that is pretty much everything that you need to know. There is good torque available lower down in the rev range, so much so that the car can start in second gear, even though this is a 3-cylinder motor. Acceleration is quite good, even over 100 kilometers per hour and above. There is good poke from the engine, so
you can pull strongly till 140 or maybe 150 kilometers per hour if at all the roads allow and if at all the speed limits allow. And overall the gearbox is smooth, but it is not as quick as a DSG or a DCT. So maybe Tata Motors can work on this DCA a little more and make the shift times a bit faster. अभी अगर मैं मैनुअल कंट्रोल ले रहा हूं इस गियरबॉक्स पे, listen to the engine. If you are at a higher rev range and if you give a downshift input, but if that speed is going to be higher for that gear, आपका जो shift है it will be denied and you will get that notification on the speedometer cluster. So that will tell you that you are too fast for that particular gear. That will happen especially when you want to downshift. So ये चीज जो है आप जरूर नोटिस करोगे and the speedometer cluster, that prompt will inform you about it. जब आप मैनुअल मोड में इस गाड़ी को चलाने वाले हो, you will get gear shift assistance as well. So the onboard computer will tell you when to upshift and when to downshift so that you can play around with the engine and gearbox in a more fun manner. So overall it is quite intuitive, it is quite easy to understand और आप और आपके सभी फैमिली मेंबर्स इस Nexon ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक वेरिएंट का काफी अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे. इफ यू डोंट केयर अबाउट परफॉर्मेंस, इफ यू डोंट केयर अबाउट all that you can do with the engine and gearbox, just slot it in D mode and enjoy your drive. अभी बात करते हैं राइड क्वालिटी के बारे में. 16 इंच के व्हील्स का ये गाड़ी इस्तेमाल करती है. A generous side profile of the tire and the ride quality is very good. Typical of Tata Motors cars. Suspension setup जो है it is very well tuned for the Indian roads. आपको काफी कम झटके फील होते हैं inside the cabin and you will be happy at all times. Ride quality out on the highway is nice and flat. तो अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी इस गाड़ी को चलाने वाले हो, it doesn't feel bouncy, it doesn't feel wafty and it offers you a nice and stable ride. So you can munch miles at a higher speed confidently. Say for example अगर आप दिल्ली से जयपुर का सफर तय करने वाले हो, you can do that fast and the Nexon will stay flat out on that highway. Then let me tell you that जब आप इस गाड़ी को शहरों में चलाने वाले हो, मूविंग ओवर स्पीड ब्रेकर्स ऑल्सो इट मूव्स इन अ वेरी मैच्योर फैशन. थर्ड्स जो है आपको कैबिन में फील नहीं देते हैं, ज्यादा थर्ड्स आपको सुनाई भी नहीं देते हैं. सो यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, आपको आपके बैक पे बॉटम पे ज्यादा झटके फील नहीं होंगे अगर आप खराब रास्तों पे से इस गाड़ी को चलाने वाले हो. स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू बाय दिस कार एंड ड्राइव इट इन Mumbai region, especially in monsoon season, this Nexon will keep you happy and satisfied. Then let us talk about this steering wheel. इस गाड़ी के साथ ये जो आपको 2-spoke steering wheel दिया गया है with this illuminated logo, it looks all fancy and it is reasonably responsive. थोड़ी वेग फीलिंग जरूर है and there is some amount of body roll which you feel as well जब आप इस गाड़ी को तेज चला रहे हो and when you give sudden steering inputs. So for example, if I very suddenly try to switch lanes, you do feel that movement, you do feel that twitch, but the car maintains a safe and predictable line, but it is not something like a sports car. Of course it is not supposed to be because ये एक compact SUV है. Right now if I again try to give fast steering inputs, check this out. Body roll काफी आपको feel होगा, but this is not how you are supposed to drive. This is something that you will do only when you encounter an emergency and in such a maneuver गाड़ी जो है इसे हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. Steering wheel जो है it gives you a decent feel of where the wheels are pointing, but I wish that it was a little more direct and it didn't feel as vague as it does. But for the average driver it is good enough and it is easy as well. ये steering wheel जो है it weighs up reasonably at high speeds, ज़्यादा light ये feel नहीं होता है and there is not too much of a dead area in the center as well. So let me show that to you. Moving to the first lane, check this out. With minimum steering inputs as well, there is some amount of movement. तो ऐसा नहीं है that there is a dead area in the center and nothing really happens. So the steering wheel for this class of a car, it is acceptable to me. It is just not dynamically rich, but that is up to you if you prefer it or not, or if you prefer some other vehicle in the segment. आपकी क्या राय है ये आप हमें comments में जरूर बताइए.
The next point to talk about, it is the brakes. इस गाड़ी के साथ आपको disc brakes मिलते हैं only at the front. You don't get all 4 disc brakes with this Tata Nexon facelift. I wish that was on offer, but that is not being offered to you. ABS of course आपको मिल रहा है. You get stability control as well. There are a plethora of safety features which are offered as standard and also as an optional kit once you start picking up the higher, more expensive variants of this Nexon. And overall the stopping power is reasonable. Pedal feel जो है वो भी decent है. अगर आप brake pedal को हल्का सा भी tap करते हो, there is decent bite even in the initial travel of that brake pedal. So you don't have to go all in too deep onto the brake pedal to get that braking bite. So गाड़ी को किसी इमरजेंसी में स्लो डाउन करना भी आसान है and it is confidence inspiring as well. So the Tata Nexon facelift, it is ticking all the boxes. It is trying to do everything almost right and it now looks fantastic on the outside and also on the inside. So it is a well-rounded product. इस गाड़ी के साथ by the way आपको TPMS भी दिया गया है, so you can keep an eye on the tire pressure at all times so that you can keep driving safely. Overall, as a package, this is as neutral as it gets and it is trying to be a little sporty as well. It is not the sportiest car in the segment. It is not the most enthusiastic car in the segment, but it is definitely a very comfortable car in its class, and we all know that it is one of the safest cars in its segment for you and your family. Winding roads पे जब आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो, it is very predictable. There is enough grunt that this engine has. 1.2 लीटर 3 सिलेंडर मोटर है, लेकिन ये अंडर पावर्ड बिल्कुल भी फील नहीं होती है. Out on the highway 90 to 100 kilometers per hour, it is very easy, and roll on acceleration as well. When you kick that throttle pedal, it is reasonably quick as well, so you can make fast paced overtaking maneuvers as well. अगर आप ये dual clutch automatic variant खरीदने वाले हो, when you are driving this car through city streets, when you are driving it through village roads, the automatic gearbox is just as convenient. It is very smooth. आपको बिल्कुल भी झटके jerks feel नहीं होंगे. You will barely feel any head nod. It is a very comfortable gearbox for your daily use. So I think Tata Motors is offering you the best of comfort, convenience and performance as well with this engine. So अगर आप Tata Nexon खरीदने का plan कर रहे हो, if you are an enthusiastic driver, this 1.2 turbo petrol with this DCA automatic gearbox might be the right variant for you. As you can notice, मैंने सिर्फ standard drive mode activate कर रखा है. I am driving it in eco mode and it is just a very simple and comfortable drive. So overall मेरे हिसाब से टाटा की ये जो नई Nexon है, this 2023 Nexon facelift, it has improved quite a lot compared to the older versions, and it is now promising to offer you a more enriching ownership experience compared to the old versions. तो आपकी क्या राय है इस टाटा Nexon के बारे में, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. Do you have any other questions? Do you want to know anything more about this Tata Nexon? Ask me and I will try my best to help you out. Till next time, subscribe कीजिए Shifting Gears के चैनल को, press that bell icon. Always drive safe and always guys, wear your seat belts.